Good morning everyone. My today topic is single phase full wave AC voltage controller with R load. So in this circuit, in this topic we will discuss circuit diagram, voltage waveform and output current waveform, and voltage across thyristor 1 and voltage across thyristor 2, and also the output equation or parameters in this controller. Okay, so let's start discuss the output voltage waveform. This is the circuit diagram of single phase full wave AC voltage controller. This is Vm sin omega t, Vm sin omega t. Input voltage, that is Vs equal to Vm sin omega t. This is resistance, this is thyristor 1 and this is thyristor 2. This thyristor 1 will trigger in positive half cycle and this thyristor 2 will trigger in only in negative half cycle, because when this terminal is positive, this thyristor T1 can be on, and when this terminal is positive, thyristor T2 only can be on. So suppose for positive cycle at theta equal to alpha, we triggered T1 at theta equal to alpha, then output voltage will be like this, V0 will be like this, and same I0 will be like this. Now at this point voltage is 0. After this point pi, this voltage gets reverse pass, gets negative. So at this time this terminal is positive, this terminal become positive, so this terminal become positive. At this cycle is negative half cycle, T2 can only be triggered on, so T2 is triggered on at theta equal to alpha. So output you will see same as in the input. Output will be same as input, and current for resistive load, current will be exactly same as voltage. So this is the output current and voltage waveform. Again for positive cycle at theta equal to alpha, trigger T1 at theta equal to alpha, and again for negative cycle trigger T2 at theta equal to alpha. So this is the output voltage waveform, and this is output current waveform. Okay, now let's see what is the voltage across thyristor T1. This is VT1 plus minus, and this is VT2 plus minus, VT2 plus minus. Okay. Now listen carefully. When T1 is on, so voltage across T1 is same as the potential drop across T1. Voltage drop across T1 is the potential drop across T1. So when thyristor is on, the voltage across T1 is the potential drop. Okay, when thyristor gets off, thyristor gets turned off, T1 gets turned off, then suppose at this point T1 gets turned off, and from here to here, no thyristor is getting on, so no thyristor is on, so voltage across T1 is like this. Means नेगेटिव साइकिल के लिए जब यहाँ से यहाँ साइकिल नेगेटिव होगी, ये प्लस हो गया, ये माइनस, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा इस पोलैरिटी के करस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव होगा। कितनी देर के लिए? यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, T2 को ऑन कर दिया। T2 को जैसे मैंने ऑन किया तो व्हाट हैपेंड, ये टर्न ऑन हो गया। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिखेगा वो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा VT2 का। ओके, सो
when T2 is on, then voltage across VT2 is equal to the potential drop across the T2. Okay, so and polarity, current is flowing in this direction, current is flowing in this direction, like this direction. Current will flow in this direction. So according to this polarity, this voltage polarity is like this and this, so it is in negative. Okay, again for पॉजिटिव साइकिल, दिस इज द 0 पॉइंट, इसके बाद पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव साइकिल आएगा, कोई भी थायरिस्टर ऑन नहीं, ना ये ऑन है ना ये ऑन है, इन दोनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज दिखेगा। T1 के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज दिखेगा, फिर T2 के अक्रॉस कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, तो फिर T1 ड्रॉ कर रहा हूं तो सिर्फ T1 देखते हैं। ठीक है, अब T1 ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिखेगा, जो इस पोलैरिटी के अक्रॉस, ये पोलैरिटी कोई ऑन नहीं है, ये ना ये ऑन है ना ये ऑन है, इसके क्रॉस वोल्टेज कौन दिखेगा? सिर्फ ये वाला वोल्टेज। कितनी देर के लिए? जब तक के लिए वो ऑन नहीं किया जा रहा है। ओके, जैसे अब ये ऑन हो गया, इसी के अक्रॉस जो वोल्टेज दिखेगा वो सर्किट ऑन हो गया, तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी। करंट विल फ्लो लाइक दिस। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर इज लाइक दिस, सेम पोलैरिटी। सो जैसे T1 ऑन होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इस तरह से। फिर अगेन नेगेटिव, जैसे 0 के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल यहां से लेके यहां तक के लिए कोई भी थायरिस्टर ऑन नहीं है, कोई भी ऑन नहीं, तो इसके क्रॉस कौन सी पोलैरिटी दिखेगी? ये वाला, ये नेगेटिव। कितनी देर के लिए? जब तक कि आपका T2 ऑन नहीं हो रहा। और जैसे T2 ऑन हो जाएगा, इसके क्रॉस कौन सा पोटेंशियल दिखेगा? ये T2 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है। ओके, अगेन दिस इज कैन ड्रॉ लाइक दिस। This is VT1. Now let's draw VT2. Now, when voltage source is in positive cycle, ठीक है, इस साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए ना ही T1 ऑन है ना ही आपका T2 ऑन है। ओके, सो इसके लिए इसकी VT2 की पोलैरिटी ये प्लस है, ये माइनस है। इस पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, कुछ कोई ऑन ना ये ऑन ना ये ऑन है, ये प्लस है। अब इसको आप रिवर्स करके देखिए तो इसके लिए ये नेगेटिव दिखेगा। ये जितना ये सेम ड्रॉ है, ये नेगेटिव। ओके, अब जैसे ही ये T1 को ऑन कर दिया मैंने, जैसे T1 को ऑन कर दिया, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VT1 जो उसकी पोलैरिटी ये होगी, इसके लिए ये नेगेटिव रहेगा, इसके लिए ये नेगेटिव। यहां नहीं ड्रॉ करेंगे, ये पॉजिटिव है, हम नेगेटिव ड्रॉ करें। इसके ऊपर वाला पॉजिटिव, इसके नीचे चलो नेगेटिव। कोई भी रेफरेंस ले, इसके नीचे चलो नेगेटिव ही रहेगा, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर वाला ही पॉजिटिव रहेगा। ओके, अगेन फॉर नेगेटिव साइकिल मीन्स दिस प्लस टर्मिनल, यहां से लेके यहां से यहां तक कोई ट्रिगर नहीं है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ना T1 ऑन है ना T2 ऑन है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये पोलैरिटी मिल गया। ओके, बोथ पोलैरिटी आर सेम। ओके, देन बोथ पोलैरिटी आर सेम, तो देन दिस प्लस इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लस, देन voltage VT2 will be like this. Again this VT2 started conducting, this T2 conducted, then when this is conducting with for this polarity, then VT2 equal to the potential drop across the T2. VT2 is equal to the potential drop across the T2, and polarity of the potential drop is this plus and minus. So this is positive with respect to this plus is positive. So you can draw like this. Again for positive cycle, for this is the negative 0. After negative cycle, voltage becomes 0 when it's trying to get positive. When it's trying to get positive, this polarity, for again this polarity
for again this polarity, this is plus, this is minus, this VT1 and VT2 is represented negative, then it will again come in negative. Again it will draw like this, and like this. So this is the voltage waveform for output voltage, output current, thyristor voltage T1 and thyristor voltage T2. Now let's write down the equation. So equation: average output voltage. From here we see that the cycle is symmetrical about positive and negative. So average output voltage will be 0. Average output current. Current waveform is same as the voltage waveform. So average output voltage is 0. So similarly average output current is also 0. Now this is 0.1, this is 0.2, this is 0.3. RMS value of output voltage. RMS value of output voltage. RMS value of output voltage is again write VOR equal to 1 upon T 0 to T Vm square sin square omega T d of omega T. So this is the way to write the RMS value of output voltage. Now the time period T for this is pi, and output voltage is appeared from alpha to pi. So integrate from alpha to pi Vm square sin square omega T d of omega T. Now solve it. VOR equal to VOR square Vm square divided by pi alpha to pi sin square omega T will become 1 minus cos 2 omega T divided by 2 d of omega T equal to Vm square divided by pi 2 pi minus alpha. This cos 2 omega T will become sin of 2 omega T. So this equation finally become sin 2 alpha divided by 2. Okay. So VOR equal to Vm by root 2 in bracket pi minus alpha plus sin 2 alpha divided by 2 divided by pi 1 by 2. RMS value of output current. RMS value of output
current IOR equal to VOR divided by R. So this will become, this is Vm by root 2 is Vs. So you also write Vs divided by R pi minus alpha sine 2 alpha divided by 2 and divide by pi power 1 by 2. Now average power delivered to load. Let's see the average power delivered to load. P equal to IOR square R, because VOR square divided by, so I put here VOR, value of VOR square, so you can find the average power delivered to load. Power factor, input power factor equal to total power delivered to load divided by input VA. This will be equal to input power factor equal to VOR divided by VS, because IOR equal to IS. This is I0, okay. This same as IS also. So IS means whenever T1 is on, whenever I0 will flow, same IS will flow, okay, because I0 is the part of IS. So this is the input power factor, and this is the single phase full wave AC voltage controller with R load. In next lecture, we will discuss single phase AC voltage controller with R L load. Thank you.